Machephy Eduworld. Okay, then we'll continue with the questions of spring. और अब spring को हम free body diagram में include करेंगे अपने. So let us say what changes it causes and कैसे calculate कर सकते हैं जब spring को free body diagram में include करेंगे. तो सबसे पहला example I'll just do a quick revision. Springs included in free body diagram. So there is a spring constant K given है. Spring की property ये denote कर देगा K. And उस पे एक mass hanging है. Let us say sphere hanging है, sphere का mass है m. तो अभी sphere का एबिलिटी ड्रॉ करेंगे. तो नीचे फोर्स लगेगा mg और ऊपर के डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, that will be equal to kx. What is x? X is the extension. X is the extension. So यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, that is mg by k. mg by k. So अच्छा, एक्सटेंशन को बहुत ही इजीली मेजर कर सकते हैं. एक्सटेंशन को मेजर कर सकते हैं, बट मास को मेजर करने के लिए हमें किसी चीज से कंपेयर करना पड़ता है. तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड देयर इज अ मेजरमेंट डिवाइस दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस. देयर इज अ मेजरमेंट डिवाइस कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस. तो स्प्रिंग बैलेंस में सेम अरेंजमेंट होता है. देयर इज अ फिक्स्ड there is a hook on this side, कहीं पे हैंग कर सकते हैं. एंड दूसरे साइड में एक स्प्रिंग होता है जो फिक्स्ड होता है. One end is fixed, of course, and the other end it is free to extend. And on this side there are readings 1 kg, 2 kg, 3 kg like that. और यहाँ पे हम मास को हैंग कर सकते हैं. तो ये वाला फिक्स्ड एंड होता है और ये वाला फ्री एंड होता है. फ्री एंड पे हम मास को हैंग करके we can calculate the mass of the spring. So मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगेन यहाँ पे कोई मास हैंग किया तो you can measure the extension, और जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे रीडिंग्स होती हैं 0, 1, 10 kg, 5 kg like that. तो एक्सटेंशन से we can measure the mass. So spring balance जो है मास मेजर करता है by measuring the extension. It measures mass by measuring in extension. Note this down. Let's do some questions. You have to find extension in the following cases. Find extension of the spring in the following cases. Find extension of each spring in the following cases. There is a block of mass m hanging. इसका spring constant k है and pulley is massless and frictionless. Pulley is massless. Massless मतलब mass बहुत ही कम है compared to m. तो equity draw करना है of course, and then find the extension in the spring.
call this spring 1, call this spring 2. It's a spring constant K2, and call this spring 3. It's a spring constant K3. K3 को भी मास से अटैच किया गया. Find the extension in the following cases. Vaishnavi, can you tell me the answer for the first one? Vaishnavi, can you hear me? You're not audible. I can see you and you're not, you're unmute, but I can't hear you. Maybe keep mic closer to your mouth. Maybe that will work. Kushagar, can you tell me the answer? पहले वाले का. Sir, 1 minute. Still calculate. Okay. Free body diagram बन गया कुशागर? हाँ सर, डायग्राम बन गया. Okay. जिनका फर्स्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है. या टेल मी कितना आंसर आया? सर सेकंड वाले में टेंशन अननोन है ना. टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. दो टेंशंस होंगे यहाँ पे तो K2x है. यहाँ पे कितना आएगा? कुशागर फर्स्ट वाला आया? नहीं सर. सी kx is equal to 2t लिख सकते हैं. मोशन तो हो नहीं रहा. और t is equal to mg लिख सकते हैं. दोनों को सॉल्व किया तो kx is equal to 2mg आ जाएगा. And extension in the first spring will be 2mg by k. Got it? So can you please explain it once again? सी इस पुली पे फोर्स, पुली का एफपीडी बनाते हैं. पुली का एफपीडी बनाएंगे तो ऊपर लगेगा फोर्स kx, बिकॉज पुली जो है स्प्रिंग को नीचे ले जाना चाहता है, बट स्प्रिंग पुली को होल्ड करना चाहेगा, तो इसलिए ऊपर फोर्स लगा रहे हैं kx. और पुली का कोई मास नहीं है तो mg नहीं लगाएंगे पुली पे, बट देयर आर रोप्स व्हिच आर पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो दोनों रोप की वजह से देयर विल बी अ टेंशन. टेंशन का फोर्स दोनों में डाउनवर्ड डायरेक्शन में. So what is x over here? X is the displaced extension of this spring. Okay. Spring का force लिखते हैं हम k into x. X is the extension. Okay sir. Yeah. और कोई डाउट किसी को? ठीक है. फिर सॉल्व फर्स्ट. ट्राई क्वेश्चन नंबर 2. दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है तो एक्सटेंशन भी अलग अलग होगा. So keep that in mind.
बट रिमेंबर जितना स्प्रिंग फोर्स होगा उतना ही टेंशन होगा इस वाले रोप में. सो स्प्रिंग फोर्स और इस वाले रोप में टेंशन की वैल्यू इक्वल होगी. सॉल्व इट, ड्रॉ द एफपीटी, सॉल्व इट. ओके, द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं दिया हुआ है बट देयर इज अ स्प्रिंग बैलेंस. सो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा? जितना रोप में टेंशन होगा उसको मेजर करेगा. जितना रोप में टेंशन होगा उसको वो जी से डिवाइड करेगा एंड दैट विल शो एज द रीडिंग. सो यू हैव टू टेल मी कि कितना रीडिंग शो करेगा. In question number 4 also there is a spring balance. This is a spring balance. So spring balance again टेंशन को जी से डिवाइड कर देता है. जो इसके रोप में आसपास रोप में टेंशन है उसको जी से डिवाइड कर देता है and it shows the value. So to find reading of the spring balance. कितना kg weight show करेगा ये? Find reading of spring balance. Solve it, I'll back in 2 minutes. यहाँ पे ये वाला मास भी 2 kg है, ये दोनों मास भी 2 kg है. In question number 5, there is a spring constant 100 Newton per meter. It assumes that 1 kg or 3 kg वाला same acceleration से move कर रहा है. And then you have to find the extension in this spring. Solve it, I'll be back in 2 minutes. स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? Spring constant is given 100 Newton per meter. सर थर्ड वाले में. Third वाले में spring constant is not given. You just find the reading of the spring balance. That does not require the spring balance. That does not require the value of the spring constant. बिना उसके हो जाएगा. टेंशन कैलकुलेट करना है, टेंशन को जी से डिवाइड करना है. जितना वैल्यू आएगा that will be the reading. Okay, let's start with question number 2. So ऊपर वाले स्प्रिंग का एफडी बनाएंगे तो you'll get the spring force as k2x. So let us extension इसमें है x2. पुली का एफडी बनाया. So in the upward direction, let us say extension and this is x2 and extension and this is x3. So यहाँ पे force लगेगा k2x2. And in the downward direction, these two are the same rule, so same tension. Or equilibrium में है, so we can write k2x2 is equal to twice of the tension. And इसका एफडी बनाएंगे अगर स्प्रिंग का. So of course जितना टेंशन होगा उतना ही स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से एक्सटेंशन का फोर्स होगा. So tension will be equal to k3x3. And मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg that is equal to k3x3. So k3x3 is equal to mg. So we can write the value of x3 directly. X3 will be equal to
mg by k3. And from here, I know that k2x2 will be equal to twice of t will be equal to k3x3. So यहाँ से x2 आ जाएगा twice of k3 by k2 into x3. फिर x3 को यहाँ से put कर सकते हैं just to get it from here. So this will come out to be 2 mg by k2. This is mg by k3 and this is 2 mg by k2. These are the extension in the springs. Barbie has answered the message in the chat, and that is the correct answer. Then question number 3. Question number 3 solve हुआ? नहीं sir. अच्छा. So as I said, इसमें सबसे पहले टेंशन फाइंड आउट करना है. तो अगर स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, स्प्रिंग बैलेंस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इधर जितना टेंशन होगा उतना ही टेंशन इधर रोप में भी होगा. ठीक है, हालांकि रोप अलग अलग है, but on the both side it should be balanced, and this tension should be equal to k times x. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. What it will measure is, जो रीडिंग शो करेगा मास का, वेट का, जो मास का रीडिंग शो करेगा, that will be टेंशन जो इसके रोप में है डिवाइडेड बाई जी. अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज एक रोप से कनेक्ट किया मैंने और रोप से मास को अटैच किया. सो लेट अस से यहाँ पे मास लगा हुआ है 5 kg का. तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन आ जाएगा 50 न्यूटन. टेंशन आ जाएगा 50 न्यूटन. तो स्प्रिंग बैलेंस इसी टेंशन को मेजर करेगा. इस टेंशन की वजह से देयर विल बी एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग. टेंशन की वजह से एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, और एक्सटेंशन ये मेजर कर सकता है. x इज इक्वल टू टी बाई के. जितना एक्सटेंशन होगा उतना रीडिंग ये शो करेगा, उतना नीचे चला जाएगा स्प्रिंग. ठीक है, x मेजर हो गया. सो x मेजरमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना टेंशन है वो पता चल जाता है. सो ये मेजर क्या करेगा कि वो टेंशन कितने मास के इक्विवेलेंट है. सो व्हाट इट विल मेजर इज t बाई जी. t बाई जी की वैल्यू मेजर करता है. सो मेजर करता है टेंशन, बट इट विल गिव यू t बाई जी. अच्छा, t बाई जी यहाँ पे 50 है, g 10 है, तो यू विल फाइंड आउट की t की वैल्यू विल बी 5 kg. m0 की वैल्यू जो मेजर करेगा दैट विल बी 5 kg. दैट इज 5g बाई g. तो 5 kg शो करेगा ये रीडिंग में. तो नॉर्मल स्प्रिंग बैलेंस ऐसे वर्क करता है. मास की वजह से टेंशन आया, टेंशन की वजह से स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ, वो ये मेजर कर सकता है. जितना एक्सटेंशन हुआ उससे कॉरेस्पॉन्डिंग टेंशन पता चल जाता है. और इस टेंशन को अंदर ऐसा एक मैकेनिज्म होते हैं जिसको जो जी से डिवाइड करके मास के रीडिंग शो करता है. ठीक है, तो होता है लेंथ में चेंज, बट यहाँ पे रीडिंग दिया होता है मास में 0, 1 kg, 2 kg लाइक दिस. तो मेजर करता है ये मास ऑन अर्थ. तो सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेंशन, और टेंशन तो इजीली मेजर कर सकते हैं. यहाँ पे टेंशन T है, the downward direction is 2g, so tension is equal to 2g. So value of m0 will be 2 kg. नमन, ये क्लियर हुआ? हाँ sir. Okay. So this is how a spring balance measures tension, और टेंशन के corresponding क्या मास का वैल्यू है that it gives.
Then going to question number 4. Aditi, can you tell me question number 4 में कितना reading आएगा? सर अभी मैं कर रही हूँ. Okay. So एक साइड टेंशन ले सकते हैं T1, दूसरी साइड T2 ले सकते हैं. ऑफ कोर्स स्प्रिंग बैलेंस और इक्विलिब्रियम में रहेगा तो टेंशन T1 T2 इक्वल होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 में you can draw the LPDs and solve it. Here if you write the tension on the left is T1, tension on the right is T2. And of course दोनों tensions equal होने चाहिए. And here T1 should be equal to 2G and T2 should be equal to 2G. We draw the fever diagram of 2 kg and 2 kg. तो दो tensions equal है. So जो measure करेगा that will be equal to, you can either write T1 by G or you can write T2 by G. तो ये show करेगा 2 किलोग्राम. This will show as 2 किलोग्राम. सर ये 0 नहीं होगा. जीरो नहीं होगा. यहाँ पे रोप में तो टेंशन होगा ही ना. जीरो तब होगा जब रोप में कोई टेंशन ही ना हो. बट ऑपोजिट है तो. ऑपोजिट है तो स्प्रिंग तो एक्सटेंड दोनों- होगा ही, राइट? अच्छा ठीक है. स्प्रिंग एक्सटेंड होगा मतलब जितना टेंशन है उतनी रीडिंग ये शो करेगा. Then question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 किसी का आंसर आया क्या? हाँ सर. कितना आ रहा है आंसर? 20/3. 20/3. ओके, सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करते हैं. Here it will be 2G और रहेगा टेंशन T1. लेट मी से कि ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन A. तो जितना 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा उतना ही 1 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होगा. और सेम रूप तो सेम टेंशन एंड नीचे G फोर्स लगेगा mg. ऑल्सो स्प्रिंग में जितना टेंशन है, जितना एक्सटेंशन है, लेट मी कॉल इट एज kx. सो यहाँ पे लिख सकते हैं T1 minus 2G equals to 2A. और यहाँ पे नीचे एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन A1. सो kx plus G minus T1 equals to A1. ऑलराइट. इसके बाद 3 kg वाले ब्लॉक का भी एफपीडी बना देते हैं. आई डोंट थिंक इसका एक्सटेंशन. ओके, सो इट विल बी kx इन द अपर डायरेक्शन और नीचे के डायरेक्शन में इट इज 3g. और एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में, एंड इट इज गिवन दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 kg एंड 3 kg हैव द सेम एक्सेलरेशन. मुझे A1 लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज 1 kg और 2 kg का भी एक्सेलरेशन सेम ही होगा. दे आर अटैच्ड टू द सेम रो. So it is 3G minus kx is equal to 3A. So तीनों इक्वेशंस को अगर अपने साइड पे ऐड कर दें
I'll get the value of acceleration very easy. Six A kx cancel, t1 cancel. This will be 2g. So acceleration आ जाएगा 2g by 6, that is 20 by 6, so 10 by 3 meter per second square. या 2g by 3 लिख सकते हैं. 2g by 6, that is g by 3. And then we have to find the value of kx. या तो इसमें put कर दे या तो इसमें put कर दे. So kx will be equal to 3g minus 3a. That is 2g. X will be equal to 2g by k. G को 10 ले लिया. K is given as 100. So yeah, 0.2 meter is correct. So Vaishnavi, your answer is correct. 0.2 meter is right. I hope ये सबको clear है. किसी को doubt है तो पूछ सकते हैं. And then we'll move further ahead. न्यूटन्स लॉ इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हर टॉपिक में, whether in 11th or 12th, we have to draw the free body diagram. और किसी भी चैप्टर से मिक्सअप करके क्वेश्चन बना सकते हैं. तो एक्चुअली में न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन मे बी 4-5 या 3-4 ही है, बट इनका जो बाकी चैप्टर्स में एप्लीकेशन है उसकी वजह से इसका इम्पोर्टेंस वास्ट हो जाता है. ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. न्यूटन्स लॉ बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बस पूरा मैकेनिक्स इसी पे बेस्ड है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूटन से 2 स्प्रिंग्स के थे ना. पहला स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है. दिस मास इज M1. इसके नीचे एक और स्प्रिंग अटैच्ड एंड दूसरा मास M2. And the spring constant is K2. So question 1 is find extension of each spring. Find extension of each spring. Second question is, if string is cut at A, if string is cut at A, find acceleration of each block. And third is, if string is cut at B, मतलब A पे attached है but B पे cut किया. Then find acceleration of each block.
अच्छा ध्यान रखना, जब भी स्ट्रिंग को कट करेंगे तो टेंशन 0 हो जाता है, बट स्प्रिंग वाला फोर्स 0 नहीं होता, तुरंत 0 नहीं होता, थोड़ी देर बाद 0 होता है। तो टेंशन तुरंत 0 हो जाएगा, बट स्प्रिंग वाला फोर्स तुरंत 0 नहीं होगा। पहला वाला पार्ट करते हैं पहले, सेकेंड वाला पार्ट डिटेलिंग आपको। अर्जुन फर्स्ट वाला पार्ट हो गया? नहीं सर, कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना, कोई एक्सेलरेशन तो होगा नहीं ब्लॉक्स पे। So first part can be done like this. And see second part के लिए M2 तो कट ऑफ ही कर दिया, M2 कट ऑफ कर दिया तो इस पे सिर्फ M2G लगेगा, M2 वाले ब्लॉक पे सिर्फ M2G लगेगा, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन विल बी लाइक दिस। यहाँ पे K1 और एक्सटेंशन ऑलरेडी X1 था, जस्ट कट किया है, एंड दिस मास इज M1। और नीचे स्प्रिंग लूज हो चुका होगा, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगा नीचे वाले पार्ट। तो M1 का जब FPD बनाएंगे तो नीचे M1G लगेगा, बट ये स्प्रिंग कट ऑफ हो चुका है तो स्प्रिंग में कोई टेंशन नहीं रहेगा, बट ये स्प्रिंग अभी भी एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा K1 X1। तो पहले K2 X2 बैलेंस करने के लिए था, बट अभी K2 X2 बैलेंस करने के लिए नहीं है, तो ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट करने लगेगा, इट इज विद एक्सेलरेशन A1, और ये नीचे एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन A2। सो वी कैन राइट K1 X1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 A1, और यहाँ पे M2G इज इक्वल टू M2 A2। तो इसको कट किया तो ऑफ कोर्स ये फ्री फॉल ही करेगा, सो एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज G, एंड K1 X1 यहाँ से पुट करेंगे, सो दैट इज M1G प्लस M2G माइनस M1G M1 A1। So acceleration of A1, that will be equal to M2G by M। This will be the acceleration of the ऊपर वाला ब्लॉक। ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, नीचे वाला ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन। क्योंकि मैंने इस पॉइंट पे कट किया है, एंड कटिंग दैट विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन हो तो भी यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं हो, बट दिस स्प्रिंग इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड। बट अगर बी पॉइंट पे कट आउट किया, बी पॉइंट पे कट आउट किया बस ऊपर वाले स्प्रिंग की वजह से कोई भी एक्सटेंशन फोर्स नहीं लगेगी, so then the FPD will be like this। ऊपर वाला टेंशन तुरंत 0 हो जाएगा, एंड दोनों ब्लॉक्स को साथ में पहले बना लेते हैं कैसा अपीयर होगा। they will appear like this M1 M2। अब FPD ड्रॉ करें तो ऊपर जो फोर्स था तुरंत गायब हो गया, नीचे M1G तो लग ही रहा है, एंड along with that K2 X2 लग रहा है, बिकॉज तुरंत कट किया है स्प्रिंग, एक्सटेंशन तुरंत चेंज नहीं होता। और M2 की बात करें, सो नीचे M2G लगेगा और ऊपर K2 X2 लगेगा। तो प्रीवियस केस में भी K2 X2 और M2G लग रहा था, इस केस में स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में था, है ना, M2G is equal to K2 X2, so that means there will be no acceleration of this block because M2G is equal to K2 X2। बट M1 ब्लॉक पे पहले एक ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, वो गायब हो चुका है बिकॉज हमने स्प्रिंग को कट कर दिया ऊपर वाले, so acceleration will be downwards, so this one will be M1G
plus k2x2 that is equal to m1 a1. k2x2 कितना है? k2x2 will be m2g. So this is m1g plus m2g that is equal to m1 a1. So a1 की value will be m1 plus m2 g by. So नीचे वाला ब्लॉक में जस्ट ऊपर वाला स्प्रिंग कट करते हैं तो नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा फॉर स्मॉल टाइम, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, and ऊपर वाला block it will start accelerating in the downward direction with this acceleration. So a1 is this much, a2 is